Jai Gurudev. Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art Topping Organization to Yog Vaashishtha evening session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट अपलिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सायंकाल के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। आज अपने ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, यह योग वशिष्ठ के जो सारे सत्रों की जो शुरुआत है, वो सारे सत्र का जो पहला दिन था और ऋषि जी के वीडियोस जो उन्होंने योग वशिष्ठ के ऊपर जो कथन किया था, उनके वीडियोस को सुन सुन के हमने इस योग वशिष्ठ के सत्र की शुरुआत की है। आज करीब करीब 7-8 महीने इसको कंप्लीट हो रहे। इससे पहले भी हमने इसके 100 सत्र यतीम के साथ कंप्लीट किए थे। उससे पहले के जो 17 सत्र थे वो हमने ऋषि जी के वीडियोस देख के इस योग वशिष्ठ के सत्रों को यहाँ पे चलाया था। तो उसी ऋषि नित्य प्रज्ञा जी आज शिववासी हो गए हैं। अपने गुरु तत्व को उन्होंने पूर्णता से प्राप्त कर लिया है। शिवैक्य होके उसी चैतन्य में आज वह विलीन हो गए। तो आज का यह सत्र उन्हीं के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग यहाँ पे व्यक्त करते हुए यहाँ पे श्रद्धा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, आप सभी के साथ से ही ये सारे सत्र आगे बढ़ते हैं। आपकी तरफ से भी उस ऋषि जी के उस गुरु तत्व को, उस गुरु परंपरा को बहुत बहुत नमन करते हुए पूरी तरह से श्रद्धांजलि और आदरांजलि का भाव रखते हुए आराम से बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। Let us all close our eyes and sit comfortably. Let us bring our attention to our breath. अपना ध्यान अपने सांस की ओर ले आए। Let's take a normal breath in and let go. Let's take a deep breath in and let go completely. Let us breathe in for the Omkar chanting. गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः
सच्चिदानंद रूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्। गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर ले गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, whatever the words that come out of this mouth, whatever the actions that are happening, whatever the thoughts soar onto this mind, and the power of discrimination arise in our intellect, the impression that might be getting created in our memory, and if still there is an iota of that I, me, let all that be inspired by the Master alone. Pray like this. Bondage is the nature of your chitta. What you are is already free. If you have already experienced that, let's all our entire life, remaining life, be inspired by the Master alone. Pray like this. Feeling the presence of the Master within and outside. The gentle smile on your face. Slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। Today we are on our 153rd session. आज हम लोग 153वें सत्र में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमने बताया कि यह सत्र की शुरुआत हम लोग ऋषि जी से सुन के किए थे और आज शिव के साथ एक हो चुके हैं, उस चैतन्य के साथ एक हो चुके हैं। तो उन्होंने इस धर्म के बारे में, इसके बारे में क्या कहा, उनके ही मुख से सुनते हैं। और फिर आज का जो अपना एक कर्तव्य के रूप में जो अपना एक चैप्टर है, उस एक चैप्टर को, बड़ा संक्षिप्त सा चैप्टर है, 1.5 पेज का, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले ऋषि नित्य प्रज्ञा जी को हम लोग आज सुनते हैं। So I'll share my screen and हम लोग will listen to ऋषि नित्य प्रज्ञा जी।
एक जीवन के बहुत महत्व रखने वाले टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। मैं उसको धर्म कहता हूं। अच्छा, क्या है कि ये जो विषय है धर्म का, ये अलग अलग लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग एंगल से उसको समझ ही रहे हैं जीवन में। लेकिन कभी कभी कोई बहुत रेगुलरली यूज होने वाला शब्द हो तो उसका यथार्थ मीनिंग जो है वो सब लोग एक साथ में समझ लें, उसके लिए मैं उसका मेरे मन में जो मीनिंग है वहां से शुरू कर रहा हूं। अच्छा, जैसे हर जीव का एक एक सोल का इंडिविजुअल लाइफ देखें, व्यक्तिगत जीवन देखें, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से इन्फ्लुएंस्ड है। मैं जिसको कहता हूं कि सपोज मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट जीवन जा रहा है, तो उसमें हर व्यक्ति के जीवन के दो क्षेत्र हैं, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। उसमें व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस को, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को बाहर की दुनिया का बड़ा इन्फ्लुएंस होता रहता है। बाहर की दुनिया को देखें तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बाहर की दुनिया बनी है। लेकिन उस बाहर की दुनिया के प्रभाव के बावजूद हर व्यक्ति का इंडिविजुअल लाइफ जो है वो उनके अंदर घट रहा है। हर मोमेंट इन्फ्लुएंस्ड है बाहर की दुनिया से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से। लेकिन हर व्यक्ति का, हर जीव का इंडिविजुअल जीवन कहां, तो मैं कहूंगा उनके अंदर घट रहा है हर क्षण। व्यक्तिगत चेतना में जीवन पनपता है हर जीव का। और एक एक जीव को देखा जाए तो जैसे लाखों जन्मों का जीवन व्यतीत करते करते कभी शरीर लिया, कभी छोड़ा, अलग अलग योनियां बदलते बदलते आज इन शरीरों के साथ हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं। उसमें जैसे ये शरीर छूटने के बाद भी वो अनंत यात्रा चालू रहने वाली है, उसमें हर जीव का अपने अपने जीवन में एक फैंटास्टिकली पावरफुल रोल होता है। अच्छा, मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि भाई व्यक्तियों का असर तुम पर, वस्तुओं का असर, परिस्थितियों का असर, लेकिन उसी व्यक्ति के साथ, उसी तरह की परिस्थिति में, उसी वस्तु के सामने हर एक का अनुभव एकदम अलग अलग है। तो बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस है जरूर, लेकिन हर जीव का अपना एक कंट्रीब्यूशन भी है। मैं जब कहता हूं धर्म, तो उसमें मैं इस एक इंग्रेडिएंट को ऐड करता हूं कि जिसमें तुम अपना रोल पहचान पाओ। जैसे मैं कह रहा हूं बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वाली है, वैसे अंदर की दुनिया के हम 7 क्षेत्र कहते हैं ना, 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहते हैं। सबसे स्थूल शरीर, दूसरा श्वास, जिसके द्वारा शरीर चल रहा है। श्वास टूटे तो शरीर खत्म।
तीसरा मन, चौथी बुद्धि, पांचवा चित्त, छठा अहंकार, और इन सब के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाले ये सब जीव। जब मैं कहता हूं तुम या आप या वो, तो मैं इन शरीरों को तो रिफर नहीं कर रहा, मैं उन जीवों को रिफर कर रहा हूं। इन शरीरों के साथ ये जीव बैठे हैं आज। अच्छा, उसका डायनामिक्स देखिए कैसा है कि श्वास टूटा तो शरीर खत्म, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो जीव के साथ जुड़े हुए हैं, जीव की चेतना के ये चार मोड्स हैं, वो उसी स्थिति में आगे चलने वाले हैं। और इसीलिए आप ये देखें कि एकदम नए जन्मे हुए बच्चे का भी अपना स्पेसिफिक नेचर दिखेगा आपको। कुछ बच्चे जन्म से ही बड़े सात्विक, उत्सव मनाने वाले, आनंदित बच्चे होते हैं, रेयरली रोते हैं कभी छोटे से बड़े कारणों की वजह से, वरना ज्यादातर प्रसन्न रहने वाले बच्चे, क्योंकि उसके पहले का जीवन वैसा ही जिए होंगे। माता पिता को ये पता होगा कि एकदम बचपन में 5-7-10 दिन का बच्चा हो, वो भी सोते सोते नींद में मुस्कुराता है, कुछ पास्ट का याद आ रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं, ये जो जीवन यात्रा चल रही है उसमें हर जीव का जैसे इस लाइफ टाइम में अलग अलग रोल है। किसी का माँ का रोल, किसी का पिता का रोल, किसी का बिजनेसमैन का रोल, किसी का आर्किटेक्ट का रोल, किसी का आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का रोल है। ये सभी रोल कब तक? जब तक ये शरीर है। जैसे ही ये श्वास टूटी, शरीर खत्म, वो सब के सब रोल वहां खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली अंदर की दुनिया में जो प्रभाव इकट्ठा हुए, जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वाली बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस इकट्ठा हुआ, इंप्रेशन इकट्ठा हुआ, जिसको हम कर्म कहते हैं या संस्कार कहते हैं, परिस्थितियों का प्रभाव कहते हैं, वो जो इकट्ठा हुआ होगा वो उसी स्थिति में आगे जाने वाला है। ये जानने की वजह से मैं इस पॉइंट पर आता हूं कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो मैं कहता हूं, बाहर की दुनिया के व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के उतार चढ़ावों के बावजूद अपनी अंदर की प्रसन्नता, पवित्रता, सकारात्मकता बनाए रखना, ये तुम्हारा धर्म है। दूसरी बात, उस एक पर्पस को, उस एक सब्जेक्ट को और गहराई से अगर जाने तो आप देखेंगे बाहर की दुनिया है ना, उसका प्रभाव है तुम्हारी अंदर की दुनिया पर। मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा कि कोई व्यक्ति तुम में प्रेम का भाव जगाता रहता है बार बार, कोई परिस्थिति तुम में बार बार, जैसे ऑफिस जाते हो तो अलग भाव जगता है उस वातावरण में। सो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का प्रभाव है तुम पर। लेकिन इन 5 इंद्रियों के किवाड़, 5 इंद्रियों के द्वार बंद करो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे अंदर। अच्छा, व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों का तुम्हारा जो अनुभव है वो कहां हो रहा है? तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर की दुनिया में हो रहा है। अच्छा, अंदर की दुनिया में जिस क्षण प्रसन्न भाव जगा, तो व्यक्तियों का, वस्तुओं का, परिस्थितियों का, बाहर की दुनिया का क्या खेल है ज्यादा मायने नहीं रखता। उस मोमेंट के लिए जीवन बड़ा सुंदर, क्योंकि प्रसन्नता है, आनंद है अंदर। सुंदर से सुंदर व्यक्ति और समृद्ध परिस्थितियां और सब तरह की लग्जरियस चीजें इकट्ठा होने के बावजूद भी जिस क्षण अंदर की दुनिया में दूषित भाव हैं, गुस्सा है, परेशानियां हैं, नाराजगियां हैं, निराशा है, उस मोमेंट का जीवन का क्वालिटी वैसा ही। क्योंकि एक गहरा सत्य ये कि तुम्हारी अंदर की दुनिया में जो भाव जगते हैं
वो उस क्षण की तुम्हारी जीवन की क्वालिटी तय करते हैं। जो भाव बार बार जगते हैं उन भावों की तुम्हें आदत पड़ने लगती है, जिसको हम वृत्तियां कहते हैं। और वही वृत्तियां अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से ट्रिगर होती रहती हैं। वही वृत्तियां अलग अलग लोग आके ट्रिगर करते हैं तुम में। तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति ट्रिगर करने का काम करते हैं, साधन बनते हैं। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी वृत्तियों की वजह से होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं, हमें लगता है ऊपर ऊपर कि किसी की गड़बड़ की वजह से मुझे गुस्सा आया। मैं कहता हूं उस व्यक्ति के उस कार्य ने तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई गुस्से की आदत को ट्रिगर किया। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी आदत की वजह से है। मैं इसको रॉन्ग उसको राइट नहीं कह रहा हूं, लेकिन सपोज एक ही तरह का बिहेवियर 10 लोग देख रहे हैं, तो उसी बिहेवियर को देख के अलग अलग लोगों की अलग अलग वृत्तियां ट्रिगर हो रही हैं। और वो वृत्तियां बनी कैसे होंगी? तो आज तक जिस तरह का जीवन जीते जीते वो व्यक्ति ऐसा बना है, यहां तक पहुंचा है, उन आधारों पर हर एक की वृत्तियां अलग अलग हैं। जब मैं धर्म कह रहा हूं, धर्म का मतलब क्या मैं समझता हूं कि अपनी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली अंदर की दुनिया, जहां अपना जीवन चल रहा है, उसकी तिकड़म को समझना और उसको अपने काबू में, अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखते हुए तुम जैसा जीवन चाहते हो वैसा अपने आप के लिए बना लेना, ये धर्म है। अच्छा, उसी धर्म में मैं ये कहूंगा 2 स्टेप्स में बांटूंगा मैं उसको, धर्म को। एक तरफ नेगेटिव टू न्यूट्रल कहूंगा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रल टू पॉजिटिव। इसको और गहराई से समझाना चाह रहा हूं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा। आप देखिए, लाखों जन्मों वाले इस जीवन में जो जो भाव बार बार जगे उसकी वृत्तियां बनी हैं। उसमें उन वृत्तियों को थोड़ा सा गहराई से समझा जाए तो 2 प्रकार की वृत्तियां समझ में आएंगी। एक तो जीवन को नुकसान करने वाली वृत्तियां हैं और दूसरी जीवन को बड़ा लाभ करने वाली वृत्तियां हैं, या नुकसान ना करने वाली वृत्तियां, टेंडेंसीज। नुकसान करने वाली वृत्तियों से जो नुकसान हो रहा है जीवन का, उस नुकसान को समझते हुए एक एक करके उस नुकसान वाली आदतों से मन को छुड़ाते जाना, वो नेगेटिव टू न्यूट्रल का स्टेप है। और एक एक जीव का जीवन देखो, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा आगे करेंगे ही हम। तुम्हारे अंदर बनाने वाले ने जो अद्भुत शक्तियों का भंडार रखा है, जिनको सिद्धियां कहते हैं, किसी का मन पढ़ लेने की सिद्धि, या तुम जो एक बार प्रार्थना करके एक बार प्रोनाउंस करो, अगर वाक सिद्धि डेवलप हुई है तो वो मैनिफेस्ट होकर रहेगा। या जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं कि भाई आगे होने वाली कोई घटना है, उसको पहले से भांप लेने की एक सिद्धि है। अपनी चेतना का एक्सपांड करते करते ब्रह्ममय हो जाने की एक सिद्धि है। मैं कहता हूं, यू आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन द बिगेस्ट। ये जो ब्रह्म सत्य है, उसका एट विल, ऑन डिमांड अनुभव कर पाना, ये सिद्धि है। मैं कहता हूं, कोई नकारात्मक भाव जगा है, तुम जब उसको त्यागना चाहो त्याग सकते हो, अपने मन को वापस प्रसन्न बना सकते हो, बड़ी सिद्धि है। मैं कहता हूं, बहुत टाइट सिचुएशन पैदा हो रही है, मन व्याकुल होने लगा है, तुम जैसे उसको ऑब्जर्व करो, अपने मन में प्रेम और उत्साह का संचार करना चाहो तब कर सको,
सिद्धि है। ऐसी इन अद्भुत सिद्धियों को फुल्ली ब्लॉसम करने के लिए जीवन जीना, ये धर्म का दूसरा स्टेप है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव वाला। मैं ये कह रहा हूं, धर्म को अगर समझा जाए तो उसका सिनॉप्सिस मैं ये कहूंगा, कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो चेतना इन सुंदर सुंदर जीवों में है, उसी चेतना से ब्रह्म बना है। अपने उस मूलभूत ज्योतिर्मय ब्रह्ममय स्वभाव को पहचान कर जीवन जीना, यही धर्म है। Jai Gurudev. So we were listening to Rishi Nitya Pragya ji here, and Rishi Nitya Pragya ji अपना इवनिंग जो सेशन होता है, अक्सर ये हम वी डू इट इन इंग्लिश। सो बट ऋषि जी का जो ज्ञान था वो हिंदी में था, तो उसका थोड़ा जिस्ट जो है हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, एंड देन विल कंटिन्यू टू कंप्लीट अवर जो डेली जो अपना चैप्टर यहाँ पे चल रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। So, Rishi Nityapragya, we are talking about something called as your dharma. Now, what do we mean by dharma here? It's not religion that he is referring to. It is your day-to-day routine, that your responsibilities that one should follow. Now, my dharma could be different. Your dharma could be different. Now, everybody's dharma could be different. Why am I saying that? So, for example, if I am a student, my dharma is to study. If I am a mother, my dharma is different. If I am office going service servant, my dharma is different. If I am sannyasi, my day-to-day routine will be different. If I am a businessman, my routine will be different. Everybody's dharma will be different according to what they want to do. Now, this is one level of dharma. But then there is one common thing that everybody's thing is, that is the reason that Purushartha comes into picture, Dharma, Artha, Kam and Moksha. So, but that according to your individual routine and your Dharma, along with that you also have certain more things to achieve in your life. What is it that? To bring it from your, the way Rishiji explained it, that what is it that you have to do? That while walking on this path, first you have to negate the negativities. Whatever these things, that is of your tendencies within you which are damaging you, you need to first remove them. That is from bringing to that tendencies back to the neutral, and then cultivating that neutral state of your being into the positive state of your being. By doing what? By doing the sadhana, seva, satsang, all the practices, all the things which are told by Shastras to us, which are taught by Master to us, which is told by Gurudev to us. It is our duty to follow that. So there is something, so this is a part of your, and whatever the effort that you do, you put an effort to do, achieve it, that becomes your earth. That is your Purushartha. It's a part of your Purushartha. Purushartha has nothing to do with male, female. It is Purushartha is applicable to both male, female. So you have to do that Purushartha. So second one is the Artha. Now, to fulfill your Dharma, whatever means it takes to do it, do that. Put an effort for doing that. Putting that effort to achieve, to fulfill your Dharma is Earth. And what is it that for? For doing your Dharma, doing your responsibilities, fulfilling your Kartavya duties, along with the means to do it, put in efforts to do it, to achieve what? To fulfill some kamanas, some kamanas in your life.
For example, you are a student, you have taken an admission in engineering. Now we cannot say that I will not do complete engineering. It's your duty, it's your dharma to complete that study, right? When Kashibaya wanted to join Gurudev first sent him back, complete your BTech, complete your IIT. I do not want to have anybody here that because of this path you have left your studies. No, that is not what Adhyatma, that is not what spirituality teaches us. It says go, fulfill your duty first. So that is Kamna. So why that? What is that Kamna is coming? All your small little material goals in our life, we need to pay attention to that, fill that. Based on whatever role you have adopted. For sannyasi, it will be different. For brahmachari, it will be different. For the student, it will be different. For the grihastha ashram, the one who is married, for them, it will be different. It will be different for everybody, that common goals. No? But no, that individual goals, that kamana. But even that individual goals, if you want to achieve in your life, you dedicate that to the bigger purpose in your life. For example, if I want to study and I want to become an IAS officer, why I want to become an IAS officer is to serve this world. The way Kashibaya did his BTech and then now he served this world. The way Rishi Nitya Pragyaji, he is also an engineer, but he served the world. No, he adopted that path. He fulfilled that thing, adopted that path, and he served the world. So whatever your skills are there, those skills are being given to you so that you can serve the world. You can do the seva, can serve the world. So that is what is the kamna. But all of us put together, that consciousness, that chetna, which is common to all of us, attaining that is what Rishiji was telling us, to attain that experience, to attain that anubhava, that experience of what you are, what that moksha is, what that mukti is, that should be the common goal for all of us, to experience that moksha. And put things, all this put together, that becomes your Purushartha. Dharma, Artha, Kam, and Moksha. So when these things we have to achieve, here we come back to our chapter now, it's 137 chapter, where by listening to Vaashishtha Muni, Rama asked this question that Rama, what we always refer, all of the says, all Atmagani, all the knowledgeable, all the wise people, they all have said what that Brahma Tattva is, what that Shiva Tattva is, what that Chaitanya is, something which is beyond the words. It's agochar to your Vani. It's cannot be explained in words, cannot be explained, put it in a form here. No? Something which is beyond the form. To attain that, why one has to go and study the scriptures? It is not there. Shastra cannot define it. The Granthas, the Shastras, that cannot, your words cannot define that, what that is. Then why do we need to study this? Why it is being there? Why do we have to go through this? What is the import? This is the sense. This is my doubt. This is my shanka. And there is no doubt, Bhagwan, Vaashishtha Muni says, Bhagwan, that whatever you have told me, it is just like that. It is removing all the ignorance out of my life. I do agree with that. Whatever you have told me, it is that thing which is helping me. It has removed most of the things that sanchayas in life. And it is so helpful knowledge that while passing through samsara, while passing through this, it is going to help me to cross over this. This is nirvivad. There is no doubt about it. It's not undebatable truth is what you have taught me, and I do not have any objection to it or anything to it, or even this varnana, this explanation of into this samveda, or that jagruta or the swapna or the turyavastha, what that thing is there, that swayam sarna. Who has to do that? He mentions that this experience of yourself, nobody else will be able to experience that on your behalf. Neither the Shastras, nor the Gurus, not anything, nobody. Who will be able to experience it? He says only you. Only you yourself is capable of experiencing that Chaitanya. No one else. Everybody else will guide you. Then in such a situation, when it is anyway not going to
Why this thing is picture, why this Guru Shishya Samvad is coming into picture, why this Shastra Charcha, that debate and the discussion that comes into picture, why this, it is beyond this anyway. It is beyond all the sadhanas, it is beyond all the things, something which is sankalpa, that it is basically, it's there when you do the manava vyavahara shanya, you become calm and be with yourself, then it comes, and it is beyond all these things also. Then why this, why to study this? So that is where the it is impossible to define it in words, it is impossible to put it in a words. It is in that tattva bheda that is there, that anvay vyatirikta that is there, whatever is that bhava abhava, that bheda vritti that you see, it is beyond. Why this charcha, why this discussion is expected here? Why this? What is the objective of doing all these things like this? And whatever that knowledge is, how this Shastra, the scriptures will help us to attain that thing. So in all these things, this question mark, all these things, even to the wise and even to the most intelligent person, that for them also these questions comes into their mind. And then all whatever the Guru Shastra, the Kalpana, the Shastra, what is it that proof that Shastra accept? Why it is so importance is given to all the Shastra? Bhagwan, Guru Shastra, the why that we know that they are not definitely is the reason for the cause for the this Tattvajnana. The Shastras cannot be the cause for the Tattvajnana. Tattvajnana is stands on its own. It doesn't even need any support. Then why like this? Why it is so important to go through it? This is where the Vasishtha Muni answers, hey Mahaparakrami Rama. He says that, hey Rama, that whatever you are saying is, actually this exactly same thing will be repeated tomorrow in Hindi in the morning at 8 o'clock. So this today's session, evening session will be in English, morning session will be in Hindi. So you can definitely attend tomorrow morning session and that will be in Hindi. कल मॉर्निंग का जो सत्र रहेगा वो हिंदी में रहेगा, इवनिंग के जो सत्र होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं. तो वी कंप्लीट दिस इन इंग्लिश एंड देन टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock आप जरूर इसको अटेंड कर सकते हैं. यही सत्र हिंदी में भी होगा कल. तो अभी के लिए एज अ प्रैक्टिस वी हैव टू कंटिन्यू टू कंप्लीट दिस इन इंग्लिश. So he continued to explain that whatever this Shastra that you are saying, whatever the things you have explained about it, you are absolutely correct. There is no doubt that we cannot explain these things in words, or even to the topmost Shastras. It is not possible for them to define this Chaitanya, define or explain this Chaitanya. Even to all the Mahatman, the one who has realized it, for them also, they also say that they do not find words to explain it in its totality. Yet, why it is so important to go through this, let me tell you that, you listen to it. So he says that there is one small story he tells us to explain this concept. He says that once upon a time there were these people who were carrying, they are called kavri. They carry that thing on their shoulder, which has two pots on the either side, and then they bring the water using that. So there were some people, because of the situation, they have to go and bring water like this. They have to carry the water and they have to live their life. They were living with very deteriorated, very poor condition of their life. So like this, once upon a time, it happens like that, that when they have to go, even that situation also, that also gets deteriorated further, and there is this akal that comes. So there is a dot that comes, the water is not there. So right now, what is it that they have to do? That business is gone for them. That water business which they used to come and sell it, that business is gone. So now they have to hook upon something else. So now what they come together, they contemplate on it and they decide, okay, let's do this. There is a forest here and let's go to the forest. And now all these things are anyway dried. Though all the trees are getting dried, let us bring that trees, cut trees, and that thing we can sell it as a fire, that in them supplement to the fire in them, fuel. So they start continue, they agree to, everybody agrees to that, and then each one of us, they starts going to the forest. Now some of them just go, they pick up their things and they come back.
Then some of them, they go further and they say, okay, now I have more time, let me go and they do some more search. So like this, some of them even start getting that hidden wealth in the form of gold or in the form of jewels which are there, or somebody who is died, somebody is killed by the wild animal, and all their sampatti, their jewelry, that were all there. So they starts getting that also. And some of them one fine day even gets that chintaman which can fulfill their all desires, and they start living that life. No? So by listening to this story, Rama asks that, yes, you have told me this story. What is the objective? Kindly explain to me that. So that is where Vashishta says that whatever the things that I have told you, these are all the Bhulaka. This is all the humans over here. They are the humans are like this, and they are experiencing this dukkha, this daridrya, this all this situation in their life. No? We all go through this life. But then what happens, Rama, once they are introduced and they come to these things because of the concept of papa and punya. I want to do something good. I want to know something good. Somebody, some point of time, they may get introduced to this. Various types, it's possible. There are various ways people come into this knowledge. He explains multiple ways of it. They come with some icha. They come to know, if I do this, I'll achieve this siddhi. I'll do this good will happen to you. This dukkha will diminish with some expectation. Even people go to the temple not just to do worship, but to expect something out of it. So with some expectation, they will come here. No? So like that, they will come to this Shastradi, and that point of time, once they have completed their needs and they have got that thing, then again they will get away from this. No? It's only for the purpose you enter the temple. That point of time you experience that, and after that you come and you forget about it. Some people are like that. Then what happens? They start going like this. They start liking it. Initially, even though they do not like it, then they start liking it. Then they get in touch with the such good scriptures. Then they start getting in touch with the good people around. For example, the art of living. The moment people come in touch with art of living, they do the happiness program and look at the transformation that starts. So that is how it becomes. And then by listening to this knowledge, by doing the practices, ultimately they also experience the Paramananda. That is the one type of people. Like, what are the other type of people which I told you? Some of them get in touch with the sadhu darshana. They get in touch with the Sadguru. They come in contact with the good people. They start listening to them. They have an interaction with them. And all their sandhya and their doubts that are completely diminished out of their life. That is another type of people. There are some type of people who are illiterate. They don't know anything. But their devotion is very strong. So they come to this path, then walk on this path, and because of their devotion, they continue to walk on this path, they ultimately get. So in this story, what is the basic thing that we are trying to understand here is that ultimately, that while living this life, one has to do that purushartha in their life. What is purushartha? We have seen the dharma, the kam, and moksha. So that moksha, even though is ultimate, that moksha is ultimately has to experience by themselves only. Yet the other three, dharma, artha, and kam, to achieve that, these shastras, they will help them. So to walk on that path of to fulfill their responsibilities, to turn their outward going tendencies coming back to the way Rishiji explained today. That this is the first step that you have to do, to bring it back from this negativity to neutral, and then neutral to the positivity. What is it that will help you? The dharma, artha, and kamna. So these three things will help you. Then you will realize, once you start coming to this path, you start going to this, hey Raghava, once people start following this Shastra, this dharma, artha, kam, these three purushartha, that will, then they will get towards the experiences. And then that is where, after that, they will experience the Brahma, Atma. Like that. Despite of that thing is not there, it is not the subject of your words, that thing, Vachya, even the Shastras also have not put it in the words. They have not explained it. Like that, this, in case of your particular season comes, and like that you can go and experience that Navapallavi, that greenery over there. Like that, using this Shastra into the Vakya, that Brahma Bodha is only explained, or it is just put it in some words about it, some spoken about it. But just by reading that, can one get experience of that? He says no. One has to experience it themselves. They can read about it,
Probably your intellect will understand. Okay, you have heard it 10 times. I am Atma, I am Atma. Even the small kid also will say, I am also Atma. Everybody can say that, and there is nobody can stop it. But does that mean that the person who is saying that I am Atma have really experienced what he is saying? Or the one who has experienced, will that person will put it in words? What was that he experienced? This Atma, Chaitanya, Brahma, Shiva, Paramatma, any number, thousand names you take, these are just, we are addressing it. Does anybody in the world know what that is? Nobody knows. Nobody knows. So it is not something which is known by your these five senses and your intellect. This is the capability of your senses is very, very limited. It cannot experience that fully in totality. So when you leave behind all these things, all its five senses and its vrittis, what Rishi says, drop those vrittis, negative vrittis, and then after you drop it, you experience that your own swabhava. And it is where outside, it's not there outside, it's there with you all the time. That Chaitanya is there with you all the time. So dropping behind all these things, you adopt to that. Be with that. That is where you will experience that buddhi, that swatmananda prakasha, that will come into your life, and you will experience that. So he says that all these Vedanta, the Shastra, and all these things, whatever the Jagat that you are observing, it is not meant to just devastate it, that just destroy it. No, that is not what is meant for. But unless and until this is so vast, the Maya and the delusion, and its nature is also so vast, unless and until we see it in a very one particular perspective, that this world is dream, this world is just Maya, this world is just something, it is very, very difficult for one person to get out of this Maya. It is such a vast thing. No? So the Shastras are purely mean all the Vedanta, Shastras, Adhyatma, this Jagat Srishti, that Niyati, this Niyati, Niyama. No, it's not there to destroy that. But this is just to make you understand, this is just a Mithya. To make you understand a Satya, to make you understand the truth, that this is the thing. Just to you, so that your Bheda Bhavana, that your Bheda Vasana, that your discriminating vritti will come back, will settle down. No, that is the time your ajnana, your ignorance will be removed out of your system, and you will experience the joy, you will experience the shanti, and that is what is important. For that, these, all the purpose of the Shastras, or even the Shastrartha, that discussion, that Vachana, Shravana, Manthana, Chintana, all that thing is why it's done. It's for you to experience yourself. No, you have to experience it yourself. That is what is this. All these things mean to be. That is what is, and that is where he praises the one who have this panditya. Panditya doesn't mean that aapne kuch rat liya book, like it's not that. The one who has really experienced this, no, like that. If really one has come to this point, irrespective of their technical knowledge, irrespective of their academic knowledge, irrespective of what is that they have studied, if one has experienced this Atma Tattva, one has experienced this themselves in their life, even that is even more supreme. It is more even worth even than the entire kingdom of the Indra that is ruling this world. It's even more than, it's more worth than one experience living in their life. This is. So this is such a panditya, such a guru, such a sadguru, such people around you. Go down to them. Express your gratitude to them. And this is exactly what we do when we do the Guru Puja. These are the soul, these are the people, these are the souls. They are the Brahma Swarup. The Rishi Nitya Pragyaji, Brahma Swarup. He came onto the planet. He just be with the master, with that Guru Tattva, with Shri Ravi Shankarji, who is also our Gurudev. He just be with that, and he spent his entire life just fulfilling the vision of the master. Complete devotion. Complete devotion. That is what is worth. That is what is worth living this life, the way the devotees of the master live. And no words can really put their being, the experience of their life into us. The way Narada Bhakti Sutra, Narada says that I find
myself incapable of expressing what love is. In such a situation, what is something which is 1,000,000 times multiplied to your love? Is that your bhakti? How can I put it in words? There are these rishis, there is this rishi Garga, there is this rishi. They said this thing about it. I also just put an attempt to explain it, but I find myself incapable to explain my devotion, to explain my bhakti in words. Such a life of a devotee, Rishi Nitya Pragyaji lived throughout his life. To such an amazing soul, to such an amazing being. Today I bow down to that Guru. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. I'd like to take a pause here. I would like to hand over this session to you. If you want to express your gratitude, if you want to say anything, अपने आप को व्यक्त करना है, you are welcome to do that. The unmute options being made available here. You yourself can unmute and you can express yourself. Yeah, Jai Gurudev. And actually, there are no words for us to talk, you know. Rishiji has blessed each and every soul so much. And, you know, we have been in touch with Rishiji from 90s, 94, that time when I did my this. We had been to ashram, and the way his livelihood, you know, could see that each and every cell of his was so lively in the seva which he was doing. And it is an amazing example for us, you know. Really, I tell you, all his blessings, even I am here today, I can see his blessings, you know, really, in every step of my life. So in gratitude, and I really tell him that he will always be living in our hearts, through the knowledge that he has given us. He will always be alive in our hearts. Jai Gurudev, really. Jai Gurudev Sangeeta ji, I definitely Yeah. words to express our gratitude. कोई अपने आप को व्यक्त करना चाहता है तो you are welcome to express yourself. हाँ, यस, मुझे बोलना था भैया। इस साल हम ऋषि जी के साथ लेह गए थे, तो वहां से जब से लौटे हैं, तो जो भी चीजें थी बहुत छोटी छोटी, वो भी हम मतलब आसानी से छूट रही है। मतलब जो भी हमारे ड्रॉबैक्स थे या फिर गुरु के पाथ में जो भी हमारे हर्डल्स थे, वो सारे ऋषि जी के ब्लेसिंग की वजह से छूट गए। और अभी उनके जो भी यूट्यूब पे वीडियोस उन्होंने धर्मा सीरीज लॉन्च की है, वो हम रिपीटेडली देखते रहते हैं, ताकि कहीं से भी यहाँ वहाँ मतलब जो माया का जो जाल है अभी यहाँ पे, उसमें ना फंसे। इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन से पाथ पे चल रहे हैं, और उसी के लिए सिर्फ ऋषि जी उस बात के लिए हमारे लिए मतलब बहुत मायने रखते हैं। और आज ये जब न्यूज सुनी है तो पूरा दिन मतलब बता नहीं सकते, सब नॉलेज है कि ये शरीर छूटा है वगैरह वगैरह, लेकिन आज ऋषि जी के ये बहुत थोड़ा ये फील कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा ही ये इस बात के लिए मैं ऋषि जी को बहुत ही दिल से धन्यवाद करूँ। हाँ जय गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल, सबके मन में यही भाव है उनके लिए। हाँ बीना जी प्लीज बोले। Although I'm really speechless to talk about such a divine soul, जिनका कोई शब्द ही नहीं है
और मेरी लाइफ का स्टार्टिंग जब मैं 1999 में मैंने जब फर्स्ट कोर्स किया था दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और लकीली कि हम लोग ना ऋषि जी को ही बुलाते थे, तनु माँ को, ऋषि जी को। तो मैं बहुत धन्य भागी हूँ कि मैं मेरे घर पे आके वो रुके, और और एक ज्ञान की चर्चा होती थी, है ना। हम 8-10 लोग ही होते थे और ज्ञान की चर्चा होती थी, और बड़े हंसी मजाक में, है ना, जैसे बड़े लाइट मूड में। अभी भी वो चेहरा याद आता है ना। तो अभी भी जब भी मिलती हूँ आश्रम में तो वो मुझे मतलब बहुत छेड़ते थे, लेकिन अभी लग ही नहीं रहा है कि वो नहीं है। इतना ज्ञान उंडेल के चले गए मेरे लाइफ। तो बस लाइक अगर शुरुआत हुई है ना ऋषि जी के पद चिन्हों पे चल के, हम तो स्टन रह जाते थे जब वो बोलते थे तो अमृत बरसता था। और आज नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा है ना। वो स्टिल ही इज दिस कॉस्मोस, अभी भी गूंज रही है उनकी आवाजें, लेकिन एक बहुत पीस है अंदर से। Such a divine soul. He should be here. We really need him. जहाँ पे भी है बहुत खुश है, लेकिन हमें भी तो जरूरत थी ना। अभी एक एक सेशन इतना प्रोफाउंड हुआ करता था, एक अलग लेवल पे लेके जाते थे। कह नहीं सकते, वर्ड्स नहीं है ऐसी डिवाइन सोल के लिए। जय गुरु। जय गुरु बिना जी। इन सारे सत्रों की शुरुआत ऋषि जी के वीडियोस देख के, ऋषि जी के योग वशिष्ठ के सत्र है, उनके सत्र कुछ नहीं था। रात के 11 बजे पता नहीं हमने योग वशिष्ठ के सत्र अनाउंस कर दिए थे। वी हैड नो आइडिया व्हाट इज इट अबाउट। जस्ट कि ऋषि जी के वीडियोस देख के अपने ज्ञान की जो तृष्णा जो थी उसको हम लोग थोड़ा सा शांत कर लेंगे। उनके वीडियोस देख के 17 दिन तक हमने सिर्फ ऋषि जी के वीडियोस देख के योग वशिष्ठ सत्र को चलाया। उसके बाद में we came in contact with Yatin also. Yatin also started, and then that is how that all this thing journey continued to almost 7-8 months, 9 months, which is completed to this journey. That something which is Rishiji started for us, it is inexpressible. There are so many experiences. The way Binaji has explained, I have also spent very good amount of time with Rishiji, doing seva with him. There are no words to explain that. और वो अनुभव अभी भी लगता है ना, तो बिल्कुल बिना जी बोल रही है ना, ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसा लग रहा है कि ही स्टिल देयर विद अस, बिल्कुल है। और जैसे बिना जी ने कहा कि वो जहाँ कहीं भी वो तो आनंद में, वो तो ब्रह्म स्वरूप ही थे, वो आए ही थे यहाँ पे बस अपने आप को व्यक्त करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ब्रह्म में ही थे, ब्रह्म में ही विलीन हो गए, हाँ शिव में ही विलीन हो गए। यही हम लोग कह सकते हैं उनके बारे में, और क्या कह सकते हैं। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो अनम्यूट अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। हाँ शशि जी बोलिए। भैया वो तो हमेशा हम लोगों के दिलों में रहेंगे ही जिंदा। वो एक ऐसे थे कि जिनको कभी कोई नहीं भूल सकता, कभी भी। कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग का बंदा तो कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने जो बुक लिखी है, छपी भी नहीं थी तब उन्होंने एक कोर्स लेना शुरू किया था। इस बुक का सारा सार उसमें था, और बड़ा 2-2 घंटे का उनका चलता था, और उस पर डिस्कशन करते थे, और कहते थे क्वेश्चंस पूछो, और ये सब चलता था। तो इतना मतलब ऐसा लगता था कि वास्तव में एक एक शब्द उनका जो है ना, वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत ही हाँ। वो कोरोना शुरू हुआ था, और वहां उनका वो कोर्स शुरू हुआ था। तब उनकी ये बुक आई नहीं थी मार्केट में, छप रही थी तब वो बता रहे थे कि वो छप रही है और वो आप लोगों को मिलेगी। तो हम लोगों को तब वो मिली थी, 10-10 बुक्स मिली थी। तो हम लोगों ने काफी गिफ्ट किए थे सबको। तो उन्होंने बोला गिफ्ट करना है तो गिफ्ट करो, और अगर आपको लगता है कि पैसे देके लेना है तो पैसे देके। तो मैंने बहुत गिफ्ट किए। मैंने बोला इतनी अच्छी नॉलेज कोई पैसे के लिए थोड़ी ना देगा, है ना। ऐसे जितने लोग पढ़ेंगे तो उसका ही ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो अभी जिनको मैंने दी उनके सबके फोन आ रहे हैं, अरे आपने उनकी बुक हमें गिफ्ट की थी ना। तो मैंने कहा उसका एक एक शब्द पढ़ो, आप मनन करो कि उन्होंने क्या क्या उसमें बोला है। जो बोला है वो सब उन्होंने उस वक्त बोल के हम लोगों को जूम के थ्रू सब, पूरे कोरोना में बहुत लंबा चला था उनका ये प्रोग्राम।
तो वो मतलब मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि उस वक्त मैंने वो ज्वाइन किया और उनका ऐसे लाइव करके देखा सारा। मैं अपने आप को बहुत धन्यभागी समझती हूँ इस मामले में, सच में। हम सबका सौभाग्य है कि जैसे सच में गुरुदेव अपने जीवन में है। चलिए सही बात। को यहाँ पे अर्पण करते हैं, 2 मिनट का मौन हम लोग उनके लिए रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। चलिए आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।